Welcome to my channel PRS Programming. In this video we are going to learn how quickly we can identify the correct option from 4 given options. Also we will learn how to find it out your compilation time error, runtime error, syntax error. Also we'll find out the outputs especially related to method. So let's check. So the first, it says that method which changes the state of an object is known what? The options are pure, impure, replace method and none of this. Now we know there is a method called pure method and impure method, but we don't have any method called replace method. So obviously this option is not a correct one. Leave it. Okay. Now none of this is also not a correct option. Pure and impure method is right answer, but which one? Now let's say that it is saying that changes the state of an object. These are the key terms that we have to find it out from the question. Now what is pure method? The method which does not change the state of an object or instance variable are called pure methods. वो चेंज नहीं करता है, जो है उसको रिटर्न करवा देता है आपको. Now what is impure method? Impure method allows us to change the state of an object. That means it allows us to change the instance variables. So it is not the right answer. So pure method is the right answer. Also we should know that pure method is also known as your getter method and impure method is also known as your setter method. So let's see. Yes, we are correct. Let's move for the next one. So in the next question it says that the process of calling a function in such a way that changes in the formal argument, look at this, changes in the formal argument reflects the actual argument. Now it says that it reflects the changes. Where it reflects the changes? In the actual argument. So these are the key terms we have to find it out in the question. Now when I am passing a fundamental type variable or a variable to a method, that is called call by value. When I am passing an object to a method, it is called call by reference. Now it says that formal parameter, that means the parameter which is available in the method is called formal parameter. Now what is called actual parameter or actual argument? The argument or the parameter that I am passing to a method is called your actual argument. Now it says that reflects, that means changes. If I do some change inside the method, it will also available to the main method. The reflection will be available in the main method. That is only possible in case of call by reference. So this is my correct answer. And call by value, as I said, that if I am passing a fundamental data type variable, then what happens? The value is going to be changed inside the method, but the changes is not going to reflect in your main method or the method which calls it. Now call by method, we don't have such kind of mechanism, and obviously none of this is not the right answer because we already got the answer called call by reference. So let's see. Yes, we got the right answer. Now let's check the question number 3. The question number 3 says that the process of calling a function in such a way that the changes in the formal parameter, आ गया की term आपका formal arguments does not reflect. Now this one is also not reflecting on the actual argument. So the previous question was telling about it is reflecting. Now it is telling it is does not reflect. Let me recall you again. If I am passing some parameter to a function and the function changes it and those changes is not reflected in my calling method, the method which calls it is called your call by value. If I am passing some parameter to a method and I am doing some changes inside it and those changes is reflected in the calling method, the method which calls it is called your call by reference. So उस हिसाब से this one is your correct answer is your call by value, क्योंकि हम जो पैरामीटर भेज रहे हैं मेथड को, मेथड के अंदर जो चेंज हो गया वो चेंजेस आपको फिर से मिल रहा है. कहां पे मिल रहा है? जिसने कॉल किया था उसको मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं आप कॉल बाय रेफरेंस.
हमने कुछ भेजा मेथड को, मेथड ने उसमें कुछ चेंजेस किया और वो चेंजेस हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने कॉल किया था, हमें नहीं मिल रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉल बाय वैल्यू. सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज योर कॉल बाय वैल्यू. यस, वी आर राइट. So now are you ready for the next one? But before that we'll check it out how exactly this is working with the help of your programming. Look at this, I am defining a method void show inside which I am passing a parameter called x. Okay, now simply I am displaying system.out.print. I am just increasing the value by x by 1 and displaying it. Fine. Now inside the main method I am creating an object. I am calling this method c and I am saying int x is equal to 10. I am storing some value 10 in this. I am saying system.out.print x value I am displaying. I am saying over here I am giving a message for your reference before. That means before calling this method, what is the value of x, and after calling the method, what will be the value of x, whether there is any change or not. Okay. Now I am calling this method c.show. Fine. Now exactly what I am doing, and I need to pass in parameter. That's why it is showing an error message. Okay. What exactly I am doing? I am storing 10 in a variable called x. Now I am displaying the value of x. Now after that I am calling this function. Now x value is passed over here. This value is 10. Now it is incrementing it by 1, makes it 11, then displayed. So output will be 11. I am making this one for your convenient. I am saying that within the method. अब method के अंदर इसका value क्या होता है? So it will display 11. Now after this it will come back over here. Now it will display x again. If it is displaying 11, then the changes is reflected. The changes that is made inside the method is reflected in the method which calls it. Now if it is 10, then the changes is not reflected. Now in this case I said that this is a fundamental variable. I am passing a fundamental variable, that means it is called by value. In case of call by value, the changes will not be reflected. Because of that reason we are going to get the output before 10, within the method 11, then after, there should be after it is again will be your 10 only. So let's see, look at this, before 10, this one it is displaying. Now it is calling the method, it is coming over here, here it is 10, makes it 11, that's why displaying within the method. So look at this, within the method 11, after that control comes back over here, displays after x. Look at this, after x it is also 10. So that's why it is called your call by value. Now we'll see call by reference. Suppose instead of a fundamental variable I am passing the object, check object ch. Okay, now I am saying that ch dot x. Now I am making ch dot x to increment by 1. Okay, now this is an object, I don't have instance variable, that's why it is showing error message. I am making it an instance variable called x. Okay, where x value is initialized to 10. Now this has to be your c dot x. Now here I need to call c dot x because these are all instance variables now. So this is your c dot x. Now I need to pass the object c over here, not in fundamental variable. These are all c dot x. Why? Because this x is my instance variable and this is in static method. The instance variables are accessible with the help of object inside your static method. So that's why I am giving objects over here. Now look at over here what happens. The same thing. Now only difference is that I am passing an object. I am passing an object to this. Now what happens? The object comes over here. It says that ch dot x plus plus. Now it changes the instance variable. So that's why in this case, before it will display c dot x, the instance variable x value is 10, that's why it will display 10.
Now it will pass the object over here, it will change the object by 1. So within the method it will display 11. Now when it will come back, it will refer to c.x again, that is the instance variable. So that's why it will be 11, because the changes is reflected. Now let's see, look at this. Before it is 10, as I said that x value is 10, that's why it is displaying 10. Now it is calling the method, passing the object. Now here I am incrementing the instance variable, that is the key term, that I am passing an object. So whatever changes will be made inside the instance variable of an object will be reflected to the calling method. So here it is displaying within the method it is 11. Now I am coming back over here, I am again referring to the instance variable c.x, that's what it is 11 again. So I think you have understood it rightly, perfectly. Now you will not do any mistake in your examination, whatever may be the mode of the question, they are going to change it for you, because you have perfectly understood everything of your method, especially related to parameter, call by value and call by reference. So let's check it out the next question. So the next question says that which method is used to check whether the next token, now it is talking about next token, is a Boolean type or not. That means it is checking, it is not accepting. Understand the question, it is saying that whether it is a Boolean type or not. ये पूछ रहा है आपने जो डाटा दिया है क्या ये Boolean है या नहीं. ये नहीं बोल रहा है कि आपको एक Boolean डाटा एक्सेप्ट करना है. So we know that the next function is used to accept a word excluding space. It is accepting, it is not checking. Now hasNext, it is used to accept or check. Look at this, the main thing is your hash. You have to check this one. अगर मेथड से पहले आपका हैश लगा हुआ है, that means वो चेक करता है कि आपने जो डाटा दिया हुआ है वो एक वर्ड है कि नहीं है. So that's why it is checking hasNext. Now nextBoolean is used to accept a Boolean data from the user, but it is not checking. Now look at this, has is given before this, that means it is going to check. अब ये चेक कर रहा है आपने जो डाटा दिया है वो Boolean टाइप का है या नहीं. So that's why as per my point of view the correct answer is your hasNextBoolean. I think your answer is same. So yes, both of us are correct. Now we'll move towards the next question. Now the next question says that dash method can be used to accept a token from the scanner object. Now again, what is a token we should understand. The smallest unit in my program is called token. जितना भी छोटा छोटा वर्ड्स आप लिखते हो, जितना छोटा छोटा कीवर्ड लिखते हो, everything, the symbol that you are using, hash, plus, your operators, everything is called a token. Now it says that used to accept. Now this is the key term. In the previous question it was talking about whether it is a token or not and what type of token you are accepting. वो चेक कर रहा था आपने क्या एंट्री किया हुआ है. अब ये चेक कर रहा है कि आपने क्या दिया उसको. एक्सेप्ट ए टोकन फ्रॉम द स्कैनर ऑब्जेक्ट. स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू से आप एक टोकन को एक्सेप्ट करते हो. सो नेक्स्ट इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ वर्ड, नेक्स्ट लाइन इज गोइंग टू एक्सेप्ट ए सेंटेंस इंक्लूडिंग स्पेस. There's a difference between your next and next line. Next में आप सिर्फ एक ही वर्ड एंट्री कर सकते हो, बट नेक्स्ट लाइन में आप मोर देन वन एक्सेप्ट कर सकते हो इंक्लूडिंग स्पेस. जैसे कि आपने एंट्री किया ये वाला लाइन, तो अगर आप नेक्स्ट यूज करोगे वो सिर्फ मेथड को लेके जाएगा, वो सिर्फ मेथड को लेके जाएगा क्योंकि इट विल एक्सेप्ट ए वर्ड ओनली. ठीक है. अगर आप नेक्स्ट लाइन यूज कर रहे हो और ये वाला पूरा आप एंट्री मार रहे हो उसमें, सो ये क्या करेगा, ये पूरा ले लेगा क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन है, इंक्लूडिंग स्पेस ये एक्सेप्ट करता है, स्पेस भी ये ले लेता है. ठीक है. अब नेक्स्ट टोकन, ऐसा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास के नेक्स्ट टोकन, सो विल इग्नोर दिस. नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि नेक्स्ट इज देयर. सो नेक्स्ट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट ए टोकन. एक एक छोटा छोटा इंस्ट्रक्शंस आप जो दे रहे हो स्कैनर के थ्रू में, वो टोकन किस हिसाब से जाता है, नेक्स्ट के थ्रू जाता है. सो लेट्स चेक इट आउट. यस, वी आर राइट. Are you ready for the next question? Now let's check the next question. The next question says that which of the following method returns the truncated value. आगे आपका key point, underline it, truncated value of the number when the fractional part is, yes,
less than or equals to 0.5 and returns the next higher value. It's talking about higher value for more than 0.5. This is more than 0.5. We know that maths class provides me these kind of functions, and all options are belongs to math method. And floor, ceil, rint, round, all are belongs to math method, and these all are used to round up, round down, truncate, like this. So we have to understand these methods. The first one we'll talk about floor. Now in case of floor, what happens? It round downs the parameter or round downs the value to the nearest value, and ceil, it will round up the value. It will round up value to the nearest integer. So floor round down करता है, ceil round up करता है, but कहीं पे ये नहीं कहा गया है आपको कि floor या ceil में आपका ट्रंकेट होता है. सो ये दो आंसर आपका नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता है. ना rint एंड राउंड, इनमें से देखना है. ना rounded integer, rint is called your rounded integer. In this case it says that if the fractional value is 5, that is your fractional part. Look at this. This is your fractional part and this is your integral part. Now it is talking about your fractional part. If the fractional part is less than or equals to 0.5, then it will truncate the fractional part. It will remove the fractional part. That's all. But when it is talking about if it is higher than 0.5, fractional part is higher than 5.5, then it will round up to the nearest integer. वो round up कर देता है उसको. So मेरे ख्याल से ये करेक्ट आंसर है. अब ये राउंड क्यों नहीं हो सकता? ना ओनली डिफरेंस बिटवीन rint एंड राउंड इज दैट इट इज लेस देन और इक्वल्स टू. rint here less than or equals to, but in case of round it is saying that less than. This equals to is not available. It says that if the fractional part is less than 5, then it will truncate. Otherwise it will, if it is 0.5 or more than 0.5, it will round up to the nearest integer. So that's why round is not the correct answer. So yes, we got the right answer. Now we'll check this with the help of coding, that how we are going to get the different output based on this methods. Okay, let's check. Now let's check. मैंने यहाँ पे आपके लिए floor, ceil, rint and round सारे मेथड मैंने यूज किया हुआ है, और आई एम यूजिंग math dot because these methods are belongs to your math class, so that's why I'm using math dot. Now look at this, every parameter is having fractional part 0.2 common. In all these parts I'm having fractional part 0.2 which is less than 5. Okay, now in this case floor, it will round down the value, so that's why the fractional part will be removed and the answer will be 10.0 because its return type is double. Now in case of ceil, it will round up the value, so that's why it will remove the fractional part and will make round up, that is 11. So answer will be 11.0 because return type is double. Now rint, it will round down or truncate the value to the nearest integer if the fractional part is 5 or less than 5. Now in this case round, it will check the fractional part, it will truncate the fractional part and increase the fractional value, increase the integral value by 1 if it is more than 5, but if it is less than 5 or 5, it will not do it. Fine. So in this case we are going to get the result is called your 10.0, here it is 11.0, here it is 10.0 and here it is also 10.0. So let's see, we got the answer 10.0, 11.0, 11.0 and 10.1, and this is 10 because round returns in the form of your integer. Okay, now we'll check it out for exactly 5. Okay, I'm putting 5 over here, here also 5, here also 5 and here also 5. Now let's run this. Look at this. In this case I'm getting 10.0 because return type is double and it's round down the value to the nearest integer. So round down, that's why it is 10.0. Now it is rounds up the value irrespective of the fractional part. It rounds up, that's why it is 11.0. Now in this case 10.5 is given and the result is 10 because
If it is 5 or less than 5, then it truncates the fractional part. If it is more than 5, then it will increase it to the nearest value. That is, it will make it as 11. अगर ये 5 से ज्यादा होगा तब जाके ये 11 होगा और इसका नेक्स्ट वैल्यू आएगा, इंटीग्रल पार्ट का नेक्स्ट वैल्यू आएगा। और यहाँ पे आपका 11 आ रहा है क्योंकि ये 5 को इंक्लूड करता है। ये कहता है अगर 5 से लेस है, 5 से कम है, तब जाके ये फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकेट होगा, इंटीग्रल पार्ट रहेगा। अगर ये 5 या फिर 5 से ज्यादा है तो इंटीग्रल पार्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 10 ओवर हियर फॉर द फ्लोर, फॉर say 11, for RINT 10, for round it is 11. Now we'll make it more than 5 now. 9, I'm putting 9 common. I'm putting common value in all the cases. 9 and 9. Look at this. Irrespective of the fractional part, it will round down. That's why 10.0. Now, irrespective of the fractional part, it will round up. That's why it is 11. Now, the fractional part is 5 or less than 5. Then it will truncate. Otherwise, it will increase it by 1. So, ये 5 से ज्यादा है आपका, इसीलिए ये 11 हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है? 5 से अगर कम है तो इंटीग्रल पार्ट रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा। दैट मीन्स 10 आएगा। अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा है तो इंटीग्रल पार्ट विल बी इंक्रीज बाय 1। ओके, नाउ लेट्स सी। सो दैट्स व्हाई लुक एट दिस। दिस इज 10.0, दिस इज 11, दिस इज आल्सो 11 and this is also 11 because in both the cases the fractional part is more than 5. So I think now you are clear about all these 4 methods. Now we'll see the next question. The next question says that which method is used to accept a character. एक character accept करने के लिए कौन सा method use होता है? Especially we don't have any method to accept a character. Okay. So nextChar है ही नहीं क्योंकि next है, nextLine है, nextInt, nextFloat, nextBoolean. But nextChar कुछ function है ही नहीं हम लोगों के पास, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। nextCharacter भी नहीं है हम लोगों का। next.char@, 0, yes, 0 stands for first index position. next is used to accept a word. next क्या करता है? एक word लेता है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर को वो रिटर्न करवाएगा। सो फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है? एक अल्फाबेट होता है। सो विच इज यूज्ड टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर। सपोज आपने ये वाला इनपुट दिया है आपने, सो नेक्स्ट क्या करेगा? नेक्स्ट विल एक्सेप्ट दिस पार्ट, नेक्स्ट ये वाला एक्सेप्ट करेगा। अब इसका 0 पोजीशन, डॉट कैर एट 0 पोजीशन, इसका 0 पोजीशन में क्या है? ए है। सो ये क्या करेगा? ए को रिटर्न करवाएगा। सो फॉर मी दिस इज द राइट आंसर एंड ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दो मेथड है ही नहीं हम लोगों के पास। तो चलो, our right answer is next.char at 0. But look at this, in some cases they will give over here called error, and in next they will give it like this, next, they will write like this, next, next, then they will give without parenthesis, they will give dot, then they will say caret. So this is will generate an error, so be careful about it, check it perfectly. char at 0, सब कुछ सही रहेगा आपका, सब कुछ, लुक एट दिस, सब कुछ सही रहेगा आपका, बट यहाँ पे वो लोग पैरेंथेसिस हटा देंगे, सो इट विल जनरेट एन एरर। बी केयरफुल अबाउट इट, इफ एरर इज अवेलेबल वी हैव टू चेक इट परफेक्टली। ओके, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विल सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द वैल्यू पास टू ए मेथड आर प्रिमिटिव टाइप। आगे प्रिमिटिव टाइप, it is termed as gas. Primitive type के हमें underline करना है। I am passing the value to a method. Now the options are again pass by value, pass by reference, and both is also available. Now we have already seen that अगर हम किसी मेथड को एक वेरिएबल भेजते हैं which is known as your primitive data type और fundamental data type, उसमें क्या होता है? चेंजेस रिफ्लेक्शन नहीं करता है। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को भेजते हैं या फिर एरे को भेजते हैं उसका चेंजेस रिफ्लेक्ट होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको वैरायटी वे में मिल जाएगा, काफी मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन डाला जाता है, बट आपको स्टिक रहना है फंडामेंटल में। क्या? अगर हम कोई फंडामेंटल डाटा टाइप भेजते हैं उसका रिफ्लेक्शन अपना कॉलिंग मेथड में नहीं होता है, चेंजेस नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। अगर हम किसी मेथड का एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं या फिर एरे भेजते हैं तो उसका चेंजेस रिफ्लेक्शन हो जाता है। कहां पे? जो मेथड उसको कॉल करता है, तो उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अब क्वेश्चन में आ जाइए,
it is passing primitive type. So directly you will say that it is pass by value. Look at this. It will take very less time if you understand the requirement of the question and what are the key points are available in the question. So my answer is pass by value and it is the correct answer. Now धीरे 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 हम लोग डिफिकल्टी की ओर जाएंगे. ओके, सो मूव फॉर द नेक्स्ट वन. Now in the next question it says that among the following which method does not have body. ऐसा कौन सा मेथड है जिसका बॉडी नहीं होता है? दैट मीन्स सिर्फ प्रोटोटाइप होता है उसका. दैट मीन्स मेथड हेडर होता है, उसमें सेमीकोलन दिया जाता है. जैसे कि हम बोलते हैं कि void आई एम सेइंग void is a return type, add is your method name and I'm passing parameter to it called int x which is called your parameter. Is it clear? Now यहाँ पे जो हम लोग कर्ली ब्रैकेट देते हैं इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, which is block or scope also called. ठीक है, ये बोल रहा है the body is not available for the method. That means we have a semicolon over here that is known as your prototype. तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसका बॉडी नहीं लिखा जाता है? सो ए क्लास, we cannot call it as a class because class is not a method. It is talking about method. So next is interface. Now interface is also not a method. It is also available with the help of your body. So it cannot be your answer. Abstract can be your answer. Because in case of abstract method what happens, we don't have body, the header only available in the class and its body is defined inside the derived class. abstract method का सिर्फ प्रोटोटाइप रहता है, कहाँ पे? बेस क्लास में. उसका डेफिनेशन मतलब ये बॉडी के साथ जो लिखा जाता है उसको डेफिनेशन बोलते हैं. ये सिर्फ जो है आपको हेडर बोला जाता है इसको. ओके, abstract मेथड में ये वाला हेडर सिर्फ रहता है बेस क्लास में और उसका डेफिनेशन दैट मींस ये कंप्लीट वन कहां रहता है? डिराइव्ड क्लास में. सो ये आंसर होगा abstract क्लास. कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता बिकॉज कंस्ट्रक्टर का भी बॉडी होता है. सो माय आंसर इज योर abstract. It's not constructor, not interface, not class. So try to understand what is abstract. Then whatever may be the question, in whatever means they are going to change the question, you are going to get the correct answer. You can click the right option. Okay, are you ready for the next one? Now the next question says that default access specifier for a method of a class is dash. अब ये डिफॉल्ट क्या होता है? अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं, अगर अपने आप कुछ मिलता है और या फिर जेवीएम आपको कुछ देता है ऑटोमेटिकली, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट. सो अब ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफॉल्ट आपको समझ में आ गया. अब एक्सेस स्पेसिफायर, क्या क्या एक्सेस स्पेसिफायर मिलता है जावा में? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट. फाइन. नाउ फॉर ए मेथड हो या वेरिएबल हो, अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या फिर मेथड डिफाइन करते हो, उसको कुछ एक्सेस स्पेसिफायर दिया जाता है. जैसे आप लिखते हो पब्लिक क्लास डेमो, तो पब्लिक इज योर एक्सेस स्पेसिफायर. अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन करते वक्त या फिर मेथड डिफाइन करते वक्त आप कुछ एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हो, तो ऑटोमेटिकली कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर आपको मिल जाता है? ठीक है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर मिलता है. ठीक है, बट यहां पे तो डिफॉल्ट का ऑप्शन है ही नहीं. समझ में आ रहा है? सो देखिए, डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है आपको. व्हाट इज प्राइवेट? प्राइवेट इज क्लास स्कोप दैट इज अवेलेबल विद इन द क्लास. प्रोटेक्टेड इज कॉल्ड योर डेरिवेशन स्कोप दैट मींस इट इज अवेलेबल टू बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास. पब्लिक इज योर प्रोग्राम स्कोप दैट मींस इट इज अवेलेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम. पूरा प्रोग्राम में आपको वो अवेलेबल हो सकता है, आप इसको यूज कर सकते हो. एंड पैकेज इज योर डिफॉल्ट स्कोप और डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज योर पैकेज स्कोप. मतलब उसी पैकेज के अंदर ही वो मिलेगा, किसी दूसरे पैकेज में वो नहीं मिलेगा. जानबूझ के उन्होंने डिफॉल्ट के बदले आपको पैकेज दे रखा है. सो माय आंसर इज योर पैकेज. आई थिंक योर आंसर विल बी पैकेज ओनली. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है. Now what is the next question? It says that identify the prototype. Look at this. It is talking about prototype. Prototype मतलब मेथड हेडर के बाद आपका सेमीकोलन आएगा. ठीक है,
अरे वाह, सब में सेमीकोलन है और एरर भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो, ऑफ ए मेथड चेक, दैट मीन्स मेथड नेम इज योर चेक। सब में चेक करो, यस, सब में मेथड का नेम चेक ही है। दैट रिटर्न्स ए डबल, दैट मीन्स आपको चेक करना है रिटर्न टाइप डबल है कि नहीं है, ठीक है। की टर्म आ गया अभी, ठीक है, ध्यान दो अभी। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, इसमें वर्ड है, ये भी नहीं हो सकता, वर्ड है, तो आपका आंसर बी या फिर डी हो सकता है, क्योंकि रिटर्न टाइप इज डबल। एंड रिसीव्स ए स्ट्रिंग डाटा टाइप, अच्छा, दैट मीन्स वो एक स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है एंड एन इंटीजर एरे, और एक इंटीजर एरे लेता है। अब ये स्ट्रिंग का एरे ले रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इंटीजर एरे तो ले रहा है, बट ये बोला कि स्ट्रिंग डाटा ले रहा है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग एरे दिया गया है, सो ये आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रिंग एन, यस, इट इज टेकिंग ए स्ट्रिंग डाटा, ओ इट इज ऑल्सो टेकिंग ए स्ट्रिंग वेरिएबल, सो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें एरे चाहिए, एरे, ठीक है, ये भी गलत हो गया। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, इट इज टेकिंग एन इंटीजर एरे, इट इज टॉकिंग इंटीजर एरे, इट इज टेकिंग ए स्ट्रिंग डाटा, यस, इट इज टेकिंग ए स्ट्रिंग डाटा, सो दिस इज द राइट आंसर। ठहर जा मेरे भाई, गलत हो गया ये, ठहर जा। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, मैच हो गया तो ये भूल जाते हैं कि रिटर्न टाइप का भी पंगा है, यहाँ पे फट से मार देते हैं ये वाला ऑप्शन। इसीलिए पहले आप जब रिटर्न टाइप मैच कर रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे वर्ड है, आप पहले ही मार्क करो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस आर नॉट करेक्ट ऑप्शन। सो जब आपको ये वाला मैच मिल जाएगा, आप फट से आंसर मत मारो। देखो यहाँ पे ये क्रॉस दिया है आपने, ठीक है। सो यहाँ पे चलते हैं, एक स्ट्रिंग डाटा ले रहा है और एक इंटीजर एरे ले रहा है, रिटर्न टाइप डबल है, तो आंसर इज डी, ऑप्शन इज आंसर डी। ओके, वी गॉट इट। भारी लग रहा है क्या आपको? आराम से पढ़ो कूलली। सब कॉन्सेप्ट का मीनिंग अगर समझ में आ गया, क्वेश्चन से आपने की टर्म निकालना सीख लिया, ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। So the next question is that the as method automatically invoked when an object is created. We have to underline this one, when an object is created. जब एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कौन सा मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने क्या देखा था, द मेथड विच डज नॉट कंटेन्स इट्स बॉडी, उसका बॉडी नहीं होता, उसका बॉडी डिफाइन किया जाता है डिराइव्ड क्लास में, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फाइनल मेथड, द मेथड विच कैन नॉट बी ओवररिडन। अगर आपने एक मेथड लिख लिया, उसको फिर से आप ओवरराइड नहीं कर सकते डिराइव क्लास में, मतलब उसी नाम का दूसरा मेथड आपको डिराइव क्लास में लिखने के लिए अलाउ नहीं है। फाइनल, हम बोलते हैं ना, फाइनल आंसर बोलो, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह ये बोल रहा है, अगर आपने एक मेथड डिक्लेयर किया है, उसको फाइनल बनाया है, दैट मीन्स उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते डिराइव क्लास में। अब ये बोल रहा है इट इज ऑटोमेटिकली कॉल, अपने आप कॉल होता है, ये तो हो नहीं सकता। कंस्ट्रक्टर, यस, कंस्ट्रक्टर कैन बी द राइट आंसर। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड का फंडा क्या है, अगर एक मेथड का आप स्टैटिक बना रहे हो तो उसको आप बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हो। नॉर्मली हाउ वी यूज्ड टू कॉल, we used to call that t, where t is an object name, dot show, where show is a method name, show. So आप कैसे कॉल करते हो, आप ऐसे कॉल करते हो, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ठीक है। अगर आप उसने स्टैटिक बना दिया उसको, तो विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल इट, बिकॉज इट इज कॉल्ड क्लास मेंबर, वो क्लास का मेंबर हो जाता है, तो आप उसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो स्टैटिक नहीं है, कंस्ट्रक्टर इज द राइट आंसर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये तो मेथड बोल रहा है, which method is automatically called? It is constructor. Yes, my dear, constructor is also called method. Constructors are special methods because its name is same as class name. Okay, fine. So right answer is your constructor. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड, ना अब हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं किसको, इंस्टेंस वेरिएबल को एंड मेथड को ऑफ ए क्लास। अच्छा, ऑब्जेक्ट यूजेस, ऑब्जेक्ट क्या यूज करता है, आप एक इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो या फिर मेथड को एक्सेस करना चाहते हो। जस्ट 1 minute बिफोर आई टोल्ड
t is an object. If I want to call the method show, I will use dot show, where show is your method name, Now चलते हैं, t is your object, show is your method name, then which one is used to call it? अब आप आंसर बोलो. अरिथमेटिक ऑपरेटर है क्या? ये नहीं है. डॉट ऑपरेटर है क्या? यस, डॉट ऑपरेटर है. बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं इसको? नहीं. कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं इसको? नहीं. तो आपका आंसर क्या है? डॉट ऑपरेटर. यस. So the next question is that DIAS is the process of passing address. Look at this. It is talking about address of actual parameter to formal parameter. Call by value, call by reference. फिर से आ गया वही वाला क्वेश्चन, बट डिफरेंट एंगल में पूछ रहा है. बट आपको वही फंडामेंटल पकड़ के रखना है. क्या भेज रहा है? एड्रेस भेज रहा है, वेरिएबल नहीं भेज रहा है. अगर वेरिएबल भेज रहा है तो कॉल बाय वैल्यू होगा. अगर एड्रेस भेज रहा है, ऑब्जेक्ट भेज रहा है, एरे भेज रहा है, तो वो कॉल बाय रेफरेंस होगा. तो फट से आपका आंसर बन गया ये कॉल बाय रेफरेंस. की होलो दादा, बुझते पारिश. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले आंसर तो देख लो. आंसर क्या है? कॉल बाय रेफरेंस. ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ओके, next question says that the method that modifies the value, okay, underline it, modifies the value of an instance variable. ऐसा कौन सा मेथड है जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू को मॉडिफाई करता है? देखो फिर से क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल में पूछा गया है. वी हैव टू अंडरस्टैंड प्योर मेथड, इम्प्योर मेथड, स्टैटिक मेथड. ठीक है, प्योर मेथड किसको बोलते हैं? जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल को चेंज नहीं करता है, सिर्फ वो इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू को रिटर्न करवाता है, हमें देता है, उसको बोलते हैं गेटर मेथड. इज इट क्लियर? नाउ इन दिस केस इट सेज दैट मॉडिफाइज, सो इट कैन नॉट बी योर आंसर. नेक्स्ट, इम्प्योर मेथड, द मेथड व्हिच चेंजेस द वैल्यू ऑफ एन इंस्टेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बोलते हैं भी उसको, तो उसको बोलते हैं इम्प्योर मेथड, व्हिच इज नोन एज योर सेटर मेथड. कभी कभार इम्प्योर के बदले वो लोग दे देंगे सेटर मेथड, प्योर के बदले देंगे गेटर मेथड. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ उसका मीनिंग को समझना है. ठीक है. अब स्टैटिक मेथड क्या होता है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, द स्टैटिक मेथड इज कॉल्ड डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास. बिना ऑब्जेक्ट के अगर आपको मेथड को डायरेक्टली कॉल करना है तो मेथड को आप स्टैटिक बनाइए, वो अपने आप कॉल हो जाएगा विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. सो स्टैटिक मेथड इज नॉट द राइट ऑप्शन. नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए मेरा आंसर तो है इम्प्योर मेथड. चलो देखते हैं. यस, यही वाला आपका आंसर है. चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. फाइंड आउट द आउटपुट. इट इज टॉकिंग अबाउट फाइंड आउट द आउटपुट. ओके, सो हियर आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. Now t is an object which is calls the method show. This method is called, it is passing an parameter 3. So this 3 is going to be passed over here. So this x value will be your 3. अब ये x का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया. अंदर चलते हैं, ड्राई रन करेंगे तो आउटपुट मिलेगा हम लोगों को. So I am taking s for your sum. Okay, I am taking c as an variable. Okay, चलो आप कंफ्यूज हो गए, मैं sum ही ले लेता हूँ यहाँ पे आपके लिए. ठीक है, sum आ गया. तो अंदर आते हैं. सम का इनिशियल वैल्यू हो गया आपका 0. देन c इज इक्वल टू 1. आई एम पुटिंग 1 ओवर हियर. नाउ 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x, वेयर x वैल्यू इज योर 3. सो ट्रू. अंदर आ गए. सम प्लस इज इक्वल टू c, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू सम इज इक्वल टू, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू सम इज इक्वल टू सम प्लस c. सम इज इक्वल टू सम प्लस c. सम प्लस c. So what is the sum value? Your sum value is 0. 0 is added with 1. 0 plus 1 is 1. It's stored in sum. So that's why sum is 1 now. Now after that, it is having one statement only. It will move up. C++. अब c का वैल्यू हो गया 2. 2 is less than equals to 3. True. अंदर आ गया. अब sum is my 1. C is my 2. 2 plus 1 is 3. So it is storing it in sum. So now the sum becomes your 3. Now it will move up. C++. Now it is 3. 3 is less than equals to 3. ये भी true है क्योंकि equals to है यहाँ पे. तो अंदर आ गया.
sum is my 3 and c is my 3. 3 plus 3 is 6 stored in sum, so it becomes your 6 now. Fine. Now c plus plus, c is your 4. Now 4 is less than equals to 3 false. तो हम लूप के बाहर आ गए. रिटर्न सम, तो ये कहाँ पे रिटर्न करवाएगा? द मेथड विच कॉल्स इट. सो यहाँ पे कॉल रिटर्न किया तो RES का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे 6 हो गया, क्योंकि ये सम को रिटर्न करवा रहा है और सम का वैल्यू आपका 6 है. ठीक है, सो ये आ गया RES में. आई एम डिस्प्लेइंग RES, सो माई आंसर इज 6. ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन देके आप आ जाओगे, घर में बोलोगे यस आई डिड इट, मस्त हुआ है मेरा एग्जाम. बट इसका आंसर गलत है. चलो, आपने ये क्यों इग्नोर किया? यहाँ पे आपका कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर भी है, उसको आपने क्यों इग्नोर किया? ठीक है, आपको वो देखना है कि एरर है यहाँ पे. चलो देखते हैं एरर कैसा है यहाँ पे, थोड़ा इसको क्लियर करवा देते हैं. चलो यहाँ देखते हैं एरर अगर है, पहले एरर को चेक करो आप. ठीक है, टेस्ट टी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, तो टेस्ट इज द क्लास नेम, सो इट इज करेक्ट. इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर है यहाँ पे, ये भी करेक्ट है. टेस्ट एंड एम्प्टी पैरेंथेसिस मींस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे कोई पैरामीटर कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, चेक करना. नहीं है, ठीक है. देन टी इज एन ऑब्जेक्ट, इज राइट. डॉट शो मेथड नेम इज शो, इट्स करेक्ट. पैरामीटर इज 3, इट इज पासिंग पैरामीटर 3. इट इज एन इंटीजर, दिस इज आल्सो इंटीजर. सर ये तो पूरा सही है, टाइम वेस्ट हो रहा है सर सिंपली. ठीक है, आगे देखो, आगे देखो. ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है. इनिशियलाइजेशन इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, कंडीशन इज आल्सो टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन. यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब में सेमीकोलन है. रिटर्न सम करवा रहा है, रिटर्न इज द कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू. अब ये सम को रिटर्न करवा रहा है. थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान दो, कुछ दिख रहा है आपको? The method return type is void. That means it is not going to return anything. ये कुछ रिटर्न नहीं करवाएगा. अब आप रिटर्न करवा रहे हो, ये कैसे ठीक है? ये तो गलत है, ये तो एरर है. ठीक है, देखो, it is compilation time error. हड़बड़ी मत करो, समझ में आया? ऑप्शंस चूज करते वक्त हड़बड़ी मत करो. Again I am saying if it is compile time error, run time error, be careful before giving the answer. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. चलो देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इट इज फाइंड इट द आउटपुट. ओके, इस बार गलती मत करो, कंपाइलेशन टाइम एरर है, रन टाइम एरर है. ठीक है, पहले उसको ढूंढते हैं. टेस्ट टी, चेक इट आउट. क्लास नेम इज राइट, न्यू ऑपरेटर इज देयर. टेस्ट एम्प्टी पैरेंथेसिस, नो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सिस्टम डॉट प्रिंट टी, यस. ऑब्जेक्ट इज टी. डॉट शो मेथड नेम इज शो. टेकिंग एन इंटीजर पैरामीटर, यस इज टेकिंग एन इंटीजर पैरामीटर. ओके, फाइन. So it will pass 3 over here. We know the mechanism of this, how to do the dry run. So I'm not wasting my time. You can do the dry run for this. Only you have to check. Semicolon is there. Semicolon is there. Semicolon is for initialization condition. Okay. उसके बाद return sum कर रहा है. पिछली बार ये गलत हुआ था, चेक करो अभी. Yes, it is returning an integer. और एक बात की ध्यान देना है, सम जो रिटर्न करवा रहा है उसका डाटा टाइप क्या है? इंटीजर है. रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है. देन इट इज ओके, फाइन. नाउ इट विल रिटर्न द सम ओवर हियर. नाउ इट इज डिस्प्लेइंग इट. तो पिछली बार क्या आंसर आया था इसका? 6 आया था, तो ये रिटर्न करवाएगा 6, आंसर हो जाएगा 6. होगा क्या? हम ऐसा लिख सकते हैं टी डॉट शो. पिछली बार हमने क्या लिखा था? थोड़ा देख लो, पिछली बार हमने क्या लिखा था? हमने यहाँ पे लिखा था टी डॉट शो, यहाँ पे उसको स्टोर कर रहे थे RES में. अब RES को दिखा रहे थे. अब क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे दिखा रहे हैं. हो सकता है या फिर रन टाइम एरर देगा. नो, इट इज पॉसिबल. इट इज ओनली पॉसिबल इफ द मेथड इज रिटर्निंग, रिटर्न टाइप इज अवेलेबल, देन ओनली इट इज पॉसिबल. अदरवाइज इट विल शो एन एरर मैसेज. ठीक है, so my answer is 6 this time, no error. Okay, we have. चलो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं क्या होता है. Now let's see. Oh, find out the output again. No. Compilation time error, runtime error फिर से आ गया. जल्दी जल्दी चेक करो. Class name is test. We have test. Object is there is equal to new operator to create an object. Test empty parenthesis means default constructor. चेक करना है कहीं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो नहीं है. अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो तो यहाँ पे पैरामीटर भेजा जाता है. ठीक है, टी डॉट ऑब्जेक्ट नेम इज टी. यस, इट इज राइट.
Now square is the method. Yes, method name is square. It is taking an integer parameter 3. Yes. Again it is calling t dot square matching 5. It is passing integer. Yes, it is passing 5 integer parameter. Yes, everything is correct. So that means we can get the output. It is passing 3 over here. Now r is 3. 3 into 3 is your 9. Now it is displaying 9. Look at this, displaying 9. It is not returning. So there is no chance of error over here again. Okay, fine. Now t dot square 5. It is passing 5 over here. S value is 5. 5 into 5 is 25. Okay, 5 is 25. Now it's not, return type is void. It is displaying. So it is not having a return statement. So that is correct answer. We'll get 9 and 25. 9 and 25. Oh, it is displaying. Look at this. 9 space 25. 9 close to 25. So no println. That means side by side it will print. So no space is given. So 925. Is it the right answer? No. It is not the right answer. Check where is having some problem. Now here method name is same. You might have forgotten to check this one. Method name is same and parameter is different. Is called method overloading. If method name is same and parameter is same, it will generate an error message. Got it? It is violating the rules of your method overloading. Method overloading says that within a class will have more than one method with the same name having different parameter. अब वो parameter कैसे अलग होता है? Number of parameters and types of parameter. अब ये number of parameter यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है. Types of parameter यहाँ पे integer है, यहाँ पे integer है, तो ये तो गलत हो गया. तो it is an error. अब घर आके yes मत करना, ठीक है? गलत कर रहे हो अभी आप. It is compilation time error. This is your right answer, compilation time error. ठीक है? चलो देखते हैं next one. So let's check the next one. It is find out the output. Yes, it is find out the output again, and we have the options over here. Compile time error, runtime error. चलो देखते हैं. Class name is test. Static word show. Can we use static before the method name? Yes, we can. As I said that अगर आप मेथड से पहले स्टैटिक लगा रहे हो आप उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. तो ये तो सही है. Word show system dot print show, it is displaying. Now return type is void, it is not returning anything, so no problem. Within a main method I am calling this. Yes, we are going to get the output. Yes, there is no error. So this method will call this one. Fine. Now inside this I will display show. Now I am getting show over here, so this is the right answer. No compilation time error, no runtime error. Again I am repeating, this is possible. आप मेथड से पहले स्टैटिक मॉडिफायर लगा सकते हो. अगर ये मेथड स्टैटिक है तो ये डायरेक्टली कॉल होगा विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. सो लेट्स सी. यस, वी गॉट द आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फाइंड आउट द आउटपुट. कंपाइलेशन टाइम एरर, रन टाइम एरर इज देयर. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट. फाइन. 10.3 और 0.0. नाउ लेट्स चेक इट आउट. इट कॉल्स दिस मेथड 10.3. इट हैज पास्ड टू x 10.3. okay, now 10.3 is assigned to the instance variable 10.3, so this instance variable becomes 10.3. now coming back over here I am calling object dot x where x contains 10.3, so answer is 10.3. ठीक है? गलत, फिर से गलत, फिर से गलत. ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे. look at this, the name of the instance variable and the local variable name is same. Now within this scope the highest priority will be given to local variable x. so this 10.3, ये 10.3 local variable में जो x है उसका वैल्यू उसी x में ही स्टोर हो गया. यहाँ पे आपको दो वेरिएबल मिल रहा है. इसके अंदर, इस स्कोप के अंदर आपको दो वेरिएबल मिल रहा है. एक x जो आपका लोकल वेरिएबल है और एक x जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है. दो x मिल रहा है यहाँ पर. चलो ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल, ये हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है? अब ये जो 10.3 आ रहा है, ये 10.3 किसका है? लोकल का है, तो हमने दे दिया 10.3 यहाँ पे. ठीक है?
अभी फिर से किसको दे रहा है, लोकल वेरिएबल, इसी को ही दे रहा है वो, बिकॉज विद इन दिस द हाईएस्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू लोकल वेरिएबल रेदर देन इंस्टेंस वेरिएबल। सो ये 10.3 फिर से इसी में ही रह गया, किसमें, इसमें। सो जब यहाँ पे हम वापस आते हैं t.x बोलते हैं, तो ये किसको रिफर करता है, इस x को रिफर करता है। इस x के अंदर क्या है आपका डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है डबल का 0.0, डबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है 0.0, इंटीजर का 0 होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आउटपुट आएगा 0.0, ठीक है। यस वी गॉट इट। चलो इसको थोड़ा कोड में भी चेक कर लेते हैं प्रोग्राम में कैसे होता है ये सारा चीज, ओके। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है, मेथड लिया है आपका, इंस्टेंस वेरिएबल इज x, टेकिंग ए पैरामीटर x, असाइनिंग इट टू दिस, आई एम creating an object of this, I am calling the method, the parameter is 55.9, now this x value is 55.9. Now look at this, it's showing in warning. This warning says that the local variable value is assigned to local variable only, there is no change in the instance variable. Look at this, the assignment of the variable x has no effect. ये जो असाइन कर रहा है वो खुद लोकल वेरिएबल को ही असाइन कर रहा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। सो डिफॉल्ट वैल्यू आपका 0.0 ही आएगा, ठीक है। चलो उसको रन करवाते हैं, लुक एट दिस, वी गॉट 0.0, फाइन। अब मैं इसको चेंज करवा देता हूँ, हम बोलता हूँ y, अब यहाँ पे मैंने बोल दिया y। सो अब क्या होगा, 55.9 इज पास टू y, now y is assigning to x where x is a local variable नहीं है आपका, अभी इंस्टेंस वेरिएबल है, इसीलिए ये जो x में था 55.9 ये किसको दे दिया, x को दे दिया, ये x क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। सो अब यहाँ पे मैं जब बोल रहा हूँ c.x इट विल डिस्प्ले 55.9। सो लेट्स सी, गॉट इट। इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन पसंद आया, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया, अगर आप ठीक से समझ सके कि कैसे आपको कंपाइलेशन टाइम एरर ढूंढना है, रन टाइम एरर ढूंढना है, आउटपुट ढूंढना है, हर एक मेथड का आउटपुट कैसे होता है, जैसे हमने देखा फ्लोर, सेल, RINT, राउंड, अगर ये सब अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। तो उससे आप मुझे थोड़ा एनकरेज करोगे, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं ऐसा ही आपके लिए क्वेश्चन बनाता रहूं, आप देखते रहो, और एग्जाम से जब आप वापस आओ आप जो बोलोगे यस परफेक्टली, आपके आंसर स्क्रिप्ट में भी यस होना चाहिए, ठीक है। विद दिस थैंक यू। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो, ये सारा वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।